तो सर आपको कांटेक्ट कैसे करें ग्रुप है ना, ग्रुप में आप यू कैन कांटेक्ट राइट. हाँ सर कौन सा ग्रुप सर सर Twitter पे you can if you means if you are not following us in Twitter, you can follow in Twitter. You can ask anything. ऑन हम्म. ट्विटर हम्म. सर टेलीग्राम में कोई ग्रुप है और एनी व्हाट्सएप ग्रुप अदर टेलीग्राम पे भी you can send means from where you joined this thing. सर टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर ऑल्सो Sorry. टेलीग्राम एंड ट्विटर अच्छा, टेलीग्राम से हो. You can message in Twitter also. We'll answer. ओके सर Anything else? Anyone have Art of any Art of question? investing is the only channel you have, right? In Telegram. Yeah, yeah, correct. Okay sir. And Twitter पे क्या है सर अपना नाम? ट्विटर पे AOI वेंचर्स करके है. AOI Ventures. आप थोड़ा सा एक इसमें डाल देंगे सर? लिंक डाल देते हैं जी जी जी. मैसेज में. सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे जो पूछना था, जैसे कि अभी बोलते हैं कि एफएल आके 50,000 रुपए तक जा सकता है, मतलब क्या? या एप्पल. हाँ, मतलब आगे अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं, एप्पल. प्रेजेंट फ्यूचर में. ये सी तो अभी फ्यूचर स्प्लिट हो गया. फ्यूचर फ्यूचर सी फ्यूचर नो वन नोज राइट. जी सर. हमको नहीं पता है फ्यूचर, हमें क्या देखना है. आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस. आई एम वेरी मीन्स आई लाइक दिस शेयर वेरी मच. जी सर. ठीक है. एंड Actually all the investors love this share. सो नॉट फ्रॉम हेयर, वी बॉट इट फ्रॉम हेयर. हाँ सर. दिस लेवल बिफोर गिविंग अ बोनस वी बॉट इट हेयर. ठीक ये है. सर. तो अभी दिस लेवल it has given a breakout at this level. 1250 or 1200 is the level it has given a breakout, but due to this panic and this thing happens. ठीक है. हाँ सर. But anyhow it's sustaining, it's not weakening up. ठीक है. It's trying to go up. So what I'm thinking, whenever market get everything went up means सब ठीक हो जाएगा, हाँ सर. it will come up. Otherwise this I'm taking this as a stop loss. अच्छा. This means whatever I bought at this level, above 1220, I'll हम्म. sell this share, ओके. and I'll sell all this. Means whatever I bought it at this level, I'll sell it below this 790 अच्छा. rupees. Sir, actually, according to him, when it had not splitted, he told that it can go, or it will go till 10,000 or 15,000, and it had already gone till 7,500. But Mm-hmm. what he said, I'm saying. Also, he told about clean signs. Mm-hmm. It is going to go till 25,000, and within 3 years itself, he is expecting it to go till See, 10,000. we cannot So, is this something say. related to? See, on clean signs we cannot say, because if you Okay. see the valuation there, right? A company on that valuation, we have so many company which are doing the same thing and we are getting at a cheap valuation. So why should I not go there and we'll go to the Clean Sign? See, Clean Sign is a new company and they have a different technology and they are doing at their level, but it's fine. But they are also doing capex, sir. Mhm. Mhm. And capex शायद बहुत बड़ा है ये, So जिसकी means वजह से don't expected one बहुत thing, महंगा है. one more thing, don't follow anyone's target and all those things. Follow the chart. No, no, Then I am into this only because of learning, sir. हाँ. So मतलब मैं just उनसे जो मैंने देखा ना, उनका जो मैंने देखा ना, हाँ. उसको देख के मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. इसीलिए मैंने आपको आज जो भी क्वेश्चन पूछे ना, वो somewhere रिलेटेड See, थे, जो मुझे which एक्चुअली वो share डॉट्स ज्वाइन which करने थे. share कहाँ तक जाएगा, I don't know. हाँ What I हाँ, have नहीं to वो why ठीक I है. have to follow. See, if it breaks this level, after that it went back to 10,000, 20,000, I don't know. Fine, but ओके ओके. I have to save my money, right? If I हम्म. invested here, I should definitely exit here. ये सर. Otherwise, maybe stock market. If you go हाँ सर. back and see the history, company went from 30 rupees or from whatever, from where it came, and it went up to 10 times, 20 times, again it back to
or below their listing price. There is a Yes, sir. Yes, sir. It's stock market, anything can happen. Hmm. Viniji, is it a good time to enter Zomato right now? 1 minute, huh? एक सेकंड होल्ड करना. हेलो. बस क्या कहते हैं, बस 5 मिनट में मैं निकल रहा हूँ, 5-10 मिनट में निकल रहा हूँ, बस मीटिंग खत्म हो रहा है मेरा. मैं हूँ अभी क्या कहते हैं राजेंद्र नगर में. हाँ, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली. हाँ, you can ask again. Sorry for that. Is it a good time to enter Zomato? Zomato, I'll tell not fully. If you want to invest in Zomato, my suggestion will be ki have a chunks whenever you find a panic in market or there is a dip in the share. Means all these new age company like Zomato, Paytm, Nykaa, and whatever those things, right? No one knows in future what they'll become. And these, see, there are so many old investors, they'll not like to invest into this share because they totally follow ROI, PE, and all those things. This company don't have anything. But if you take my opinion, you should don't invest on all Paytm, Zomato, whatever the newest company, whatever you feel कि future है इस company का, and feel like हाँ इस company can grow in future, invest in chunks whenever there is a correction in the market or panic in the market. Don't invest in any time. Monthly नहीं करना है. जैसा भी panic आया, you can send some money into those companies because this company don't have any support or these things they'll not follow. ये कब तक पेटीएम कहाँ तक गिरेगा, 2 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में ही रहेगा, नो वन नोस. बट हाँ, if you think Paytm will sustain in the market and it will grow in future, fintech, it will take all fintech company and it will grow significantly in future, you can invest in Paytm. If you think no one knows, so you can do a chunks of investment into these companies. And how you can find whether your whatever you have invested is doing good or not, you have to see a quarterly result. Okay. So this company I don't tell, means Zomato, इसमें क्या कोई support or वो will not find. According to me, if I'll be there, if it breaks this 117 level, I'll not be put any more investment according to technical into this. But in future, no one knows this Zomato because they have some cash and all those things where they can invest and can buy a good. If you think Zomato only into a food business, you're wrong. Zomato have other business also. Yes, sir. So they can acquire, they can do all those things. So that's what I'm telling. Nykaa chart technically has given a very good reversal. But still this level I think it'll take 1500, 1600 will take as a resistance this level. 1650 or whatever level is this. So in IPO, if you are invested into IPO and it opens at higher levels, so always try to have a stop loss either on the low of that day when it opens,
That is the basic of means getting a profit from IPO. Means from, for example, if you invested in, you got a IPO of Nykaa, it went up till 2500, but if it went for 2500, no one knows कहाँ जाएगा, और and you'll also get a greed कि हाँ इससे ऊपर भी जाएगा, but you should have a stop loss of this level 1995 if you are invested, if you got a IPO. Otherwise, if you invested based on this trading at this breakout, then you should have a stop loss at this level itself. सर एक एडलविस का चार्ट आज सर आपने शेयर किया था, तो वो क्या है सर समझ नहीं आया। आपने एक इमेज शेयर किया था, ये बहुत ही ठीक है, मैंने शेयर किया था। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसका एक टेम्पलेट था, आपने शेयर किया था। एडेलविस का शेयर किया, चार्ट शेयर किया था। चार्ट तो शेयर नहीं किया, एडेलविस का आ रहा है नहीं था। एडेलविस यार वो रियल एस्टेट का था। रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट आती है। देखो एडेलविस का चार्ट खराब हो चुका है ऑलरेडी, बट अब जहाँ पे है ना, ये जो लेवल है यहाँ पे बेचने लायक लेवल नहीं है, यहाँ पे खरीदने लायक लेवल है, क्योंकि कंपनी का पास एसेट इससे ज्यादा है जहाँ पे उसका वैल्यूएशन अभी दिखा रहा है। ना खरीदने लायक है, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, दैट्स इट। आई एम एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग दिस। जब भी नीचे मिलता है तो कुछ शेयर उठाते रहता हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर जाएगा। हो सकता है कि मैं स्टॉप लॉस भी यही रख रखा हूँ कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगा 40 के नीचे तो मैं बेच भी दूंगा। बट हाँ, वन शुड लुक एट दिस। ठीक है, if anyone have any question, then if not, then we'll close this session. और सर नंबर ऑफ डिलीवरी काउंटर सर कहाँ से सर आप सर्च करते हो? सॉरी, किसी भी शेयर में नंबर ऑफ डिलीवरी काउंटर, मल्टीप्लायर डिलीवरी काउंटर। नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपका अच्छे से, एक बार फिर से बताएंगे। डिलीवरी काउंटर किसी भी शेयर का कैसे सर सर्च किया जाता है? डिलीवरी अगर आप, बहुत सारे ऐप है आजकल, तो आपको कहीं भी ऐप में मिल जाएगा। एक स्टॉक एज करके ऐप है, उसमें मिल जाएगा आपको डिलीवरी। ये तो एनएससी के साइट में आपको डिलीवरी का पूरा दिख जाता है। नंबर ऑफ डिलीवरी आज इस शेयर में इतना गुना इतना। हाँ, तो एनएससी के साइट से आपको मिल जाएगा पूरा। अदरवाइज आपको वहां से पूरा मिल जाएगा, क्या कहते हैं, स्टॉकेज में आपको डेली क्या कहते हैं, रात को अपडेट होता है वो 7-8 बजे, आप वहां से चेक कर सकते हैं डेली का कोई भी स्टॉक का। स्टॉकेज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Any other question anyone have? No sir, thank you. Okay. If no one have any question, Thank you so much, sir. for all the suggestions. I mean, it's emotional plus technical knowledge support. So really appreciate.